Yes, is my screen visible now? No, sir. Yes, sir. Now. Now it's visible. Okay. So I hope everyone is having their soft copy of the syllabus. So I will just go through the syllabus. We will see the framework, the blueprint of this subject. Okay. So this is the subject which was introduced in the last year in 2021. Okay, and this syllabus is formulated by myself along with one sir is there. He's a HOD from EXTC department from AC Patil College, Khargar. So his name is Nitin Chavande sir and myself. So we have formulated this syllabus. So this syllabus was introduced in the last year. So you are the second batch who will be going through this particular updated syllabus. So this syllabus, the name of this subject was given as a microcontroller and its application. Okay. Now we will be just studying the microcontroller and different types of microcontrollers. Okay. So the two different important microcontrollers which we will be studying in this semester is 8051 and ARM7. Okay. I don't want anyone to write anything. Just listen. We are just going through the syllabus. So you should know what are the different the topics which we are going to cover and what are the different your two types of microcontroller which we will be covering. So first is 8051 microcontroller and the second one is ARM7. Okay, so we have dedicated modules based upon 8051 and dedicated modules on your ARM7. Okay, so we will just go through that. So before I start, you should know the course code. It is ECC 402. The subject name, that is the course name, is microcontroller. As far as teaching scheme is concerned, we have 3 lectures per week. Okay, 3 lectures per week. There is a total period of 3. Then we have examination scheme, which is the same as we have done for the DSD. Test 1, test 2 of 20 marks, averages of 20 marks, and semester exam is of 80 marks. Okay, and the total marks is 100. So 80 plus 20 gives you 100. So that is the examination scheme. Then see the prerequisite. The prerequisite is your DSD subject. Okay, so this is a transition from DSD towards the microcontroller. Okay, so during this transition, we have to see that some aspects of DSD is used in the microcontroller. So you should have the knowledge about the DSD to better understand this microcontroller subject. Okay, so DSD is the prerequisite. See the course objective and the course outcomes. So there are 4 objectives and 4 outcomes. The first one, to develop background knowledge of computer and its memory system. Okay. Now you will ask me, is microcontroller we are talking about and why there is a computer and its memory system we have to study. So once we understand the microcontroller, you will be able to understand this, the application of this microcontroller, or if I say microprocessor. So every PC, if you say the heart of the PC is your microprocessor or microcontroller. So once we understand the working and the different aspects in the microcontroller, you will be able to understand the application areas. So the best example I could give you is the computer and its system. So the course objective is to develop the background knowledge of computer and its memory system. Second one, to understand architecture of 8051 and ARM7 core. As I have told you in this syllabus, in this subject, you will be studying with 8051 as well as with ARM7. So these are the 2 basic important microcontrollers. Okay. Then to write the program for 8051 microcontroller. So we have to perform some, the problem statement would be given to you and you have to solve that problem statement by writing down the program for 8051 microcontroller. Okay. तो उसके लिए हम we will be using the software that is a Keil, Keil. Keil software we are going to use. We will see how do you write down the program and how do you execute the program to get the solution for the defined problem. Okay, the problem could be addition of 2 number, division of 2 number, sorting of the array. Okay, there would be different practicals which we can do on this 8051.
So the important thing, the objective is to write down the program for 8051 microcontroller. The fourth one is to understand design of microcontroller applications. The last part is also important. तो जब हम मॉड्यूल में जाएंगे, that time I will be able to explain you what is this microcontroller, different applications are there. At the end of the semester, you will be able to understand 1, 2, 3, 4. Number 1, understand computer and its memory system, जो यहाँ पे है. Second one is to understand the detailed architecture of 8051 and ARM7 core. Okay, the same thing which the objective is there, and you will be able to take the outcome from that course. You will be able to write programs for 8051 microcontroller. And the fourth one is to design and applications using microcontroller. Okay, so you will be able to, once you understand this subject microcontroller, you will be able to use this microcontroller in your mini project. Okay, let me make this point very clear. Previously, now also, your final year projects are 80 to 90% based upon microcontroller. It can be 8051, it can be ARM7, it can be PIC microcontroller, it can be 8086 microprocessor. So till now, your 70 to 80% projects are, final year project I'm talking about, are based upon microcontroller. Yes, now there is advanced, technologies are emerging, like your IoT is there, then machine learning is there, artificial intelligence is there. Yes, students are moving from your microcontroller towards this particular advanced technologies, but the basic remains the same. The basic is to understand the microcontroller. Once you understand the microcontroller and the microprocessor, you'll be able to understand the advanced technology, because that is emerged from the microcontroller. Okay, but till now, I'm repeating, 70 to 80% of the projects, final year projects, are done based upon microcontroller. So this subject is very important as far as you are the student from EXTC department. Okay, so try to understand this subject very thoroughly, because this is a application point of view subject. Okay, where you will be actually using this subject in your mini project, or if you go into the final year, if you want to do some project, you will be implementing this microcontroller in your hardware. Okay, so design and applications using microcontroller. तो इसमें हम देखेंगे what are the different simple designs based upon microcontroller. So these are the some outcomes and the objectives. We will go to the topic now. So just to go with a brief understanding, we have total 6 modules. Total 6 modules are there. Okay, we will go one by one. So your module 1 consists of 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4. So total 4 sub modules are there. In the first module, we are going to understand what? Overview of microprocessor based system. This is a subject where we will be understanding the microcontroller, but before we actually start the understanding of microcontroller, you should be able to understand microprocessor. You should be able to understand the difference between microprocessor and microcontroller. You should be also able to understand what is a microcomputer also. Okay, so see, these are the different terms which will confuse you, and these are there are definite the bifurcations. There are definite set rules are there, that these are called as microprocessor, these are called as microcontroller, and these are called as a microcomputer. So we have to differentiate them. We have to study them in the comparative understanding. Okay, once the concept is clear कि हाँ ये चीजें माइक्रो कंप्यूटर में होती है, ये चीजें माइक्रो प्रोसेसर में होती है, ये चीजें माइक्रो कंट्रोलर में होती है, then you will with this clear vision you will be able to understand what is a microcontroller and the different applications. Okay, so before I start with the actual explanation of the microcontroller, you should be able to understand microprocessor, microcomputer, and the difference between microprocessor, microcomputer, and microcontroller. Okay, so the first module will give you the understanding of that. So in this first module, we'll be able to understand the overview of microcomputer system and their building blocks, memory interfacing कैसे किया जाता है. In DSD, we have done the different types of memories, RAM, ROM, and everything. Okay,
यहाँ पे हम देखेंगे कि मेमोरी इंटरफेसिंग कैसे की जाती है. ओके, steps taken by the microprocessor to fetch and execute an instruction from the memory. अभी मैं कुछ प्रोग्राम अगर लिखता हूँ and if I want that microprocessor to should execute the program, then these instructions are stored in the memory. The instructions are stored in the memory. The commands are stored in the memory. Microprocessor will take the command from the memory and accordingly it will execute the program. So how the microprocessor fetches? Fetch बोले तो लेना. Fetching and executing an instruction from the memory. So that thing also we are going to study. Then we have to understand the concepts of program counter register, reset, stack and stack pointer, subroutine, interrupts, and DMA, that is direct memory access. Okay, so these are the important terms which we have to understand in the first module. These last two sub-modules are very important. We have to understand what is RISC and CISC architecture. RISC and CISC, these are the short forms. Okay, so concept of RISC and CISC, then हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये दोनों आर्किटेक्चर भी हमको पढ़ना है और उसका कंपैरेटिव स्टडी भी करना है. ओके, ये दो इंपॉर्टेंट है, रिस्क, सिस्क, हार्वर्ड, वॉन न्यूमन. ओके, ये हमको पढ़ना है और इनका कंपैरेटिव स्टडी भी करना है. So once you understand that, then we will go with the second module, that is a memory system. In the memory system, we'll be able to understand the classification of memory. Primary memory होती है, secondary memory होती है. So we will see what is the primary and the secondary memory. The types of semiconductor memories. Already in DSD, some of them we have taken. What are the cache memory? Virtual memory concept with memory management unit with segmentation and paging, that is used for address translation mechanism. So ये सब आपको अभी सब नया, सब ये सब नया लग रहा होगा, I understand, but this thing we will take in detail for you to understand the to make your concepts very clear. Okay, so the second module is dedicated for memory system. The third module is dedicated for 8051 microcontroller, and fourth module is dedicated for 8051 assembly language programming and interfacing. तो थर्ड मॉडल में हम देखेंगे 8051 के क्या क्या सेक्शंस होते हैं, 8051 में क्या क्या चीजें होती है. बाद में फोर्थ में हम देखेंगे प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है टू एग्जीक्यूट द गिवन प्रॉब्लम. If the aim is given and if you want to solve that aim, the problem, then how the program has to be written, what are the different syntax, what are the different commands, and how do you interface 8051 with the other peripheral devices. Okay, so I should say 8051 microcontroller in module number 3, it is dedicated with the hardware part. Hardware part in the sense 8051 के अंदर क्या क्या चीजें होती है. Or fourth one is dedicated for the programming. Okay, so we will see the submodules. Here we'll be able to understand the comparison between microprocessor and microcontroller. ये सब कंपैरिजन में हो सके तो मॉड्यूल नंबर 1 में ही लूंगा. ओके, बिकॉज दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. तभी हम देखेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर में क्या डिफरेंस है और उसका डिटेल स्टडी हम यहाँ पे भी करने वाले. ओके, इन थर्ड मॉड्यूल. देन द फीचर्स, आर्किटेक्चर एंड पिन कॉन्फ़िगरेशन. ये आपका जो माइक्रोकंट्रोलर है 8051 नाम है उसका, ये कितने पिन का होता है और हर एक पिन का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इज कॉल्ड एज अ पिन कॉन्फ़िगरेशन. तो ये हम पढ़ेंगे 3.2 मॉड्यूल में, सब मॉड्यूल में. So features, architectures and pin configuration has to be studied in this 3.2. Then 3.3 is about the CPU timing and machine cycle. तो हम ये देखेंगे कि machine cycle क्या होती है, CPU timing क्या होता है. So that thing will be seen in this module. Then your input output ports. हम 8051 माइक्रोकंट्रोलर को पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो हम उसको IO पोर्ट पे लगाते हैं. तो IO पोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, that thing we are going to study. Then memory organization. 8051 का मेमोरी किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, हाउ द मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन योर 8051. तो वो यहाँ पे होता है मेमोरी, हम यहाँ पे देखेंगे. देन काउंटर्स एंड टाइमर्स. ये काउंटर्स और टाइमर्स भी 8051 में होते हैं तो हम वहाँ पे भी देखेंगे 8051 में ये क्या होता है. देन इंटरप्ट्स, ये भी चीज 8051 में होती है तो हम वो भी देखेंगे इंटरप्ट्स क्या चीज है. देन सीरियल डेटा इनपुट एंड आउटपुट. ओके,
तो डेटा मुझे सीरियली ट्रांसमिट करना है या फिर रिसीव करना है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये सब चीजें दे आर एक्चुअली द इंटरनल ब्लॉक्स ऑफ 8051। ये सब चीजें बना के ही आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर बनता है। तो हमको ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स को पढ़ना है टू अंडरस्टैंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इन फोर्थ मॉड्यूल 8051 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो हम देखेंगे कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं, देन असेंबलर, क्रॉस असेंबलर, असेंबलर डायरेक्टिव्स, ये चीजें क्या होती है। ओके, तो हम और कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैसा करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, हमको डिले सब रूटीन को कैसा करना पड़ता है, इनपुट और आउटपुट को हम अगर इंटरफेस कर रहे हैं तो उनको प्रोग्राम कैसे करना पड़ता है, टाइमर, काउंटर, पोर्ट, सीरियल कम्युनिकेशन एंड इंटरप्ट्स। ओके, ये सब इंटरफेस करने को हाउ डू यू राइट डाउन द प्रोग्राम, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन 4.4। ओके, 4.5 is interfacing with LEDs, relays and keys। एक्चुअली हम देखेंगे कि 8051 को एलईडी को इंटरफेस कैसे किया जाता है, रिले को इंटरफेस कैसे किया जाता है, और डिफरेंट कीज को इंटरफेस कैसे किया जाता है। ओके, सो once you understand the programming, you will be able to understand how do you write down the program while interfacing your LED, relay and key. So programming and the interfacing will be done in this module number 4. Then module number 5, this is module number 5 dedicated to understand ARM7 microcontroller. Okay, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन एंड फीचर ऑफ ARM7 के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कॉर्टेक्स ए, कॉर्टेक्स आर, कॉर्टेक्स एम, ये कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। देन वी विल सी द आर्किटेक्चरल इनहेरिटेंस एंड पाइपलाइनिंग, प्रोग्रामिंग मॉडल। ARM7 के बारे में भी हम इसमें डिटेल में नहीं है, बट a little bit of portion of programming of ARM7 we have to understand. Then brief introduction to exceptions and interrupts handling. Okay, brief introduction to exceptions and interrupt handling. We will see what is this concept. Instruction set, data processing, data transfer, and control flow. So this thing we will be studying in ARM7. The last module is based upon study of 8-bit microcontroller applications. तो ये जो चीजें है 1, 2, 3, 4, 5, these are straight away we have to Google search. We have to Google search, or we have to just see how this different applications of microcontroller. Okay, जैसे understanding feature of NXP 89V F51RD2 Atmega 328P and PIC 16F886। ये जो आपको दिख रहा है ना, this is one microcontroller, this is the other microcontroller, and this is the third microcontroller. These three microcontrollers are 8-bit microcontroller. 8-bit microcontroller. 8-bit microcontroller. So ये तीनों भी जो माइक्रोकंट्रोलर है, इनके सिर्फ हमको फीचर्स पढ़ने हैं। क्वेश्चंस अगर इसमें आते हैं तो इसमें सिर्फ हमको फीचर्स पढ़ना है, इसका हमको इंटरनल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ना है, इसका हमको पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ देखना है इसके फीचर्स क्या है। बाद में क्या है, सिलेक्टिंग अ माइक्रोकंट्रोलर फॉर एन एप्लीकेशन। अगर कुछ एप्लीकेशन में आपको देता हूं तो विच माइक्रोकंट्रोलर विल यू सिलेक्ट। So selection of microcontroller is totally based upon the application. आपका क्या एप्लीकेशन है वो हिसाब से आप माइक्रोकंट्रोलर को चूज करते हो। ओके, सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ हियर। 89C, ये जो पहला वाला माइक्रोकंट्रोलर है, इसका जो फीचर हम पढ़ेंगे 8-बिट का, उसका हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ 89V51 बेस्ड क्लॉक यूजिंग IR2 RTC एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो हम जब इसका इंटरफेसिंग करेंगे तो उसकी हम स्टडी करने वाले बस। देन ये एटमेगा 3289, इसका ये लास्ट में है विथ एलसीडी, और पिक का जो है वो ये है स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इंटरफेसिंग ऑफ दिस विथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इंटरफेसिंग ऑफ दिस विथ योर एलसीडी, एंड इंटरफेसिंग ऑफ दिस विथ योर डीसी मोटर। तो इन तीनों के फीचर्स पढ़ो, बाद में इनके इंटरफेसिंग किसके देखो। ओके, एक 7 सेगमेंट के साथ
एक डीसी मोटर के साथ और एक है एलसीडी के साथ। ये हमने इसलिए रखा है लास्ट मॉड्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो कंट्रोलर का इंटरफेसिंग कैसा किया जाता है, उसका इंटरफेसिंग कैसा किया जाता है। ओके, मैंने आपको अगर एक माइक्रो कंट्रोलर दिया, मैंने आपको एलसीडी दिया, एलसीडी डिस्प्ले दिया, मैंने बताया आपको कि इसको इंटरफेस करो, सो यू शुड नो कि इंटरफेसिंग कहाँ पे किया जाता है, इंटरफेसिंग के बाद प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं, उसको कैसे बंद करना जाता है, एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके, सो दिस थिंग टू हैव द हैंड्स ऑन, दिस सिक्स्थ मॉड्यूल इज इंट्रोड्यूस्ड। ये पहले नहीं था, दिस मॉड्यूल वाज नॉट देयर, बट students were not able to understand the interfacing, so to give the better the elaborative understanding of the interfacing, this sixth module is introduced. Okay, so these are the 6 modules of your subject microcontroller. Any questions so far? Yes, any question? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? No, sir. Okay, now come to the test book and the reference book. Okay, जैसे मैंने DSD में बताया था कि एटलीस्ट 1 copy you should have your own, so you should buy from the market, otherwise you will get the books from the library. Okay, even I will be sharing few of the ebooks. I think I have 3 ebooks with me, so that ebooks I will be sharing with you. So in this pandemic situation, if you don't want to go outside and if you don't want to buy, if you don't want to have your hard copy, then you can just go through the ebooks. So I will be sharing the ebooks in the classroom. Okay, so in the textbook there are 6 books are there. So out of this I would recommend you to go with the 4th one, Mazidi, 5th one, Ayla, and okay, these are the 2 important books you can go. The last module, 6th module, for 6th module you can go with this. I mean to say that these books are available in the library, but you can do one thing, directly you can Google search and you will have the ready-made material available. Okay, 6 module में से hardly very few questions will be asked, but for better understanding you go with the Google search and you will be able to see this particular the interfacing. Okay, एक्चुअली हमको उसका डेटा शीट ही पढ़ना है, तो डेटा शीट में लिखा रहता है कि इंटरफेसिंग कैसा करना होता है, क्या होता है। सो एट मेगा का यहाँ पे लिखा है, पिक 16 का यहाँ पे लिखा है, और P89VF RB2 का यहाँ पे है। ओके, सो for 6 module I think these are the important reference books. Okay, otherwise from module number 1 to module number 5 everything is covered in Mazidi. The book name is 8051 Microcontroller and Embedded System, and fifth one is Ayla. The author's name is, there are 3 authors, Gadre, Ayla, and Kenneth. Okay, and the name of the book is 8051 Microcontroller and Embedded System. Okay, there is now here these 2 books will cover your 8051. This book will cover 8051. So your ARM7 will be covered in Steve Ferber. The name of the book is ARM System on Chip Architecture. ARM System on Chip Architecture. So the author's name is Steve Ferber. So this will cover your ARM7. ARM7. Okay. So 8051 is covered in these 2 books. ARM7 is covered in this book. Last module is covered in this 3. Okay, and the introduction and the microprocessor, that thing also is covered in this particular 8051. Okay, अभी ये जो फर्स्ट वाला है डगलस हॉल का publication is Tata McGraw-Hill. Here it is microprocessor and interface. So we are not going to go with this book. Don't go with this book because this book will have the microprocessor and its interfacing. But if I have to explain you with specific 8051, we will go with this. Now even I have one ebook of Manish Patel. Okay, Manish Patel, uska ebook hai. I think I have that particular book open now. Yes. So this ebook I am going to share with you. This is also best book. Okay,
you can go with this book also. This will cover your module 1 to module 5. Okay, this will cover your module 1 to module 5. Let me show you the name of this book. 8051 Microcontroller Based Embedded System. Okay, and the author is Manish Patel. The author is Manish Patel. See the contents. See the contents. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर. यहाँ पे हमको देखो ये भी समझ में आएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है. सो दिस इज द बेस्ट बुक. ओके, ये देखो मेमोरी सिस्टम में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, रिस्क और सिस्क क्या होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड. सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट बुक. मैक्सिमम पोर्शन इज कवर्ड हियर. Okay, maximum portion is covered. Program development, process and tools. So everything is there. Arithmetic and logical instructions. अगर हमको कुछ परफॉर्म करना है तो वो भी है. Addressing modes and data instructions. Okay, so this book will give you the understanding of your 8051. Okay, 8051 and the microprocessor, microcomputer and microcontroller, the comparative study. So everything is covered in this. Everything is covered. Input output port है, serial port है, interfacing keyboard है, interrupts है, interfacing with LED is there, LCD is there, then interfacing with ADC. ये सब हमारे syllabus में नहीं है. Relay है, so interfacing with relay is there. Then external memory को interface कैसे करना है. I2C and SPI. This thing is there in the 6th module. So some of the part is there. Then 8051 variant AVR and PIC microcontroller. PIC microcontroller क्या होता है? Okay, वो सब इसमें है. Okay, so here you will be able to see maximum portion is covered related with 8051 and microprocessor. और ARM के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ARM के लिए आपके लिए ये स्टीव फर्बर है, ARM 7 के लिए. Okay, तो even I would see, let me check whether I have the ebook for this. If I have ebook, I will share with you. Otherwise, you can just refer to my video lectures. You'll be able to understand this answer. Okay, so these are the textbooks and reference books. Yes, and there is an NPTEL course, Swayam courses, Swayam course, Microprocessor and Microcontroller by Professor Shantanu Chattopadhyay. This is he's a professor from IIT Kharagpur, and this is the particular link given. So please visit this link and try to understand. This is the NPTEL video lecture by this particular professor Shantanu. So मैं explain होने के बाद भी you can just go through this particular link and try to understand by yourself. Then internal assessment 20 marks, 1 to 2020, and in average of 20, and semester exam 80. Very same thing. If everything goes well, you will be writing down your exam physically. Otherwise, you will have online. So that is related with the microcontroller. Now you also have microcontroller lab. Yes, you have also the microcontroller lab. Course code is ECL 401. Course का नाम है microcontroller lab. We will be meeting, I think, only once in a week. Okay, there is no practical oral exam. अब हम लोग ने जब ये सिलेबस फॉर्मुलेट किया था तो हमने मुंबई यूनिवर्सिटी को बोला था कि देयर शुड बी एन ओरल एग्जाम, देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल एग्जाम. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दे हैव neglected, they have not considered the practical and oral exam, so you will be having only 25 marks for the term work. Okay, so your 25 marks on the term work depends upon your journal, your lab write-ups. Okay, so see here the course objective. Have done in we will just directly go to the experiment, suggested experiments. See here, perform arithmetic and logical operations using immediate, direct and indirect addressing. तो जब addressing modes हम पढ़ेंगे तब हमको ये भी समझ में आएगा, arithmetic and logical operations. Code conversion, हमने code conversion भी देखा है, gray to binary, binary to gray to XS3. So that code conversion also experiment can be written.
ट्रांसफर ऑफ डेटा बाइट्स बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी. हम जब देखेंगे मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, तो हम देखेंगे कि जब हमको डाटा अगर ट्रांसफर करना है इंटरनल टू एक्सटर्नल मेमोरी, तो हाउ डू यू, what program has to be written down, what should be the code to transfer the data. Experiment based on GPIO, general purpose IO, timer, interrupt, delay, etc. Interfacing of matrix keyboard, LED, 7-segment display, LCD, stepper motor, and UART. Okay, so these are the interfacings, these are the some experiments which are suggested. So we will experiment, जब हम practicals में देखेंगे, we will try to solve maximum number of experiments. Okay, then computation simulation based experiments are also encouraged. वैसे we have to do some experiments on a hardware. If everything goes well, we will see if you have been asked to come to college to perform some hardware experiments. Those who have taken 2 vaccines, they can come and we will see how these experiments hands-on. We will be able to do some hands-on. वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंट्स हम हार्डवेयर पे कैसे लेते हैं. ओके, तो जैसे आप डीएसडी के लिए कुछ दिन आए थे कॉलेज में. Okay, if college permits, then we will be asking you to come to college and we will have some hardware experiments. Otherwise we will see some simulation program, simulation based experiments. Then yes, mini project based on 8051. Okay, we can have a mini project based upon PIC 8051 or AVR. Okay, ready-made of Arduino and Raspberry Pi are not recommended here. This is very important. Do not, for the mini project, do not use Arduino, do not use Raspberry Pi. You have to purely use 8051 or any other microcontroller. In that case, it can be PIC, it can be AVR. Okay, so that is the mini project. Mini project can be considered as a part of term work. Okay, आपको मुझे जो 25 marks का term work देना है, that 25 marks consists of your practical write-up as well as your timely submission of your practical write-up, as well as I can give you some mini projects which, on depending upon your mini project, some marks can be given. Okay, so total term work is of 25 marks. Okay, so I think that is the whole understanding of the syllabus. Any question you have? So can you explain about the mini project? मिनी प्रोजेक्ट के बारे में अगर मुझे आपको बताना है तो मिनी प्रोजेक्ट इज एक्चुअली वेयर you will be doing your experiment based upon 8051. Now this mini project is not, will not be can be considered as a part of a term work. ये आपका मिनी प्रोजेक्ट अलग से नहीं है 8051 के लिए. यूजुअली आपके जो हर सेमेस्टर में जो मिनी प्रोजेक्ट होता है 1A 1B then 2A 2B when you go into the third year, so that mini project is different from the mini project for my subject 80 for my subject microcontroller. I can assign you mini project, but that will be only restricted to microcontroller. Okay, that will be only restricted to microcontroller, and depending upon your outcome, depending upon your successful completion of a mini project, I can give you some term work based upon that out of 25. Okay, so it depends upon me whether I should give you mini project for my subject microcontroller or not. ओके लेकिन आपका जो सेमेस्टर वाइज जो मिनी प्रोजेक्ट होता है दैट इज द एज पर द बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कोर्स, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, सो दैट थिंग यू हैव टू डू. बट फॉर माई दिस सब्जेक्ट माइक्रो कंट्रोलर वी विल सी, बिकॉज अगर आप कुछ मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हो सो आई वुड रिक्वायर हार्डवेयर, लेकिन आप कॉलेज में अगर नहीं आ पा रहे हो, अगर सिचुएशन आगे चल के पता नहीं कैसी होगी, सो आई वुड आस्क यू टू कम टू कॉलेज एंड परफॉर्म सम हार्डवेयर बेस्ड mini project. In that case, I won't allow you, I won't give you some mini project. Okay, I can give you some assignments, I can give you some writing down some program and perform the writing down the code and simulate on the software. That thing I can ask you. Okay, so mini project के बारे में ये है कि मैं टर्म वर्क दे सकता हूँ अगर मैंने आपको मेरे सब्जेक्ट के लिए मिनी प्रोजेक्ट असाइन किया है. ओके, किया है तो टर्म वर्क वो बेसिस पे दूंगा मैं. अगर नहीं असाइन किया है तो term work will be based upon your write-ups, okay, and timely submission. That is the meaning. Is it fine? Yes, sir. Okay.
मुझे बात बताओ, आपने लास्ट सेमेस्टर में मिनी प्रोजेक्ट किया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन EDC, DSD. EDC and DSD. And what module you have used for that mini project? I mean to say that mini project was based upon whatever you have studied in your DSD or EDC. बराबर है, उसी में से आपको यूज करना है. अभी ये सेमेस्टर में आपने देखा है मिनी प्रोजेक्ट क्या, किस पे बेस्ड आपको करना है? हैव यू चेक्ड? Arduino Raspberry Pi में. यस, Arduino Raspberry Pi में. इसलिए यहाँ पे लिखा है रेडीमेड ऑफ Arduino Raspberry Pi आर नॉट रिकमेंडेड हियर. यानी ये सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट के बारे में. अदरवाइज जो आपका कोर्स है मिनी प्रोजेक्ट 1 आई थिंक 2B, वो आपको सॉरी 1B, तो ये आपको रास्पबेरी पाई और Arduino बेस पे ही करना है. ओके, वो उसी पे करना है. लेकिन ये सब्जेक्ट में अगर करना है तो आप किस पे करोगे? 8051 बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट, 8051 बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट. और अगर आपको दूसरा 8051 नहीं पसंद आ रहा है, यू कैन टेक एनी अदर माइक्रो कंट्रोलर. इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन? Yes, सर हाँ. मिनी प्रोजेक्ट इंडिविजुअली रहेगा कि ग्रुप के साथ करना है? नहीं, ग्रुप के साथ रहेगा. नहीं, ग्रुप, उसमें भी मैं ग्रुप बनाऊंगा. या फिर मैं क्या करूंगा, जो आपका मिनी प्रोजेक्ट 1B में जो ग्रुप रहेगा वही ग्रुप इसके लिए भी रखूंगा. ठीक है ना? ठीक. हाँ, यानी ग्रुप्स में शफल नहीं होना चाहिए. द सेम ग्रुप should carry out the mini project for microcontroller. The same group should carry out the mini project for your 1B. Okay, so in that case अगर मैं mini project का group बनाता हूँ, the group will remain the same. Is it fine? Any more questions? Any more doubt you have? और किसी को डाउट है? मेरी आवाज आ रही सबको? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is all about your syllabus now. Okay, so it's 55, so I can at least start with the first module, introduction to microprocessor. उसमें हम देखेंगे, let me start with directly I will take this copy. Introduction to microcontroller. Here we will be able to see what is a computer system. This is important, we will see this. सबको दिख रहा है? क्लियर? Yes, sir. Okay, now we have to define the term that is a computer system. Okay, now मैं हमेशा my intention is from starting that the concept of the student should be clear, the fundamental should be clear. Okay, without concepts, without fundamentals, आप आगे कितना भी पढ़ो, अगर आपका बेसिक्स ही अगर आपका क्लियर नहीं है, then there is no meaning of understanding the advanced, the terms, the advanced technology. So आपका अगर फाउंडेशन ही अगर ठीक नहीं है तो that will create a problem, okay, for long run. So in this subject you should be able to understand a small important terms, okay, like the computer system. अभी ये कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे a computer is what. Okay, so हम देखेंगे what is a computer, then हम देखेंगे what is a computer system. Okay, now see here, a computer is a digital device which understands and operates on binary digits 0 and 1, known as bits or binary digits. The binary digits are processed and stored as voltage levels in the circuit. हमने already देखा है DSD में high voltage, low voltage, high voltage, low voltage. So here low voltage is nothing but 0 and high voltage is 1.
So it is 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Okay, or you can say this is on and this is off. So your computer is a device which will understand the binary language, ones and zeros. उसको बाकी कुछ नहीं समझ में आता. Whatever you write down, that will be converted into ones and zeros. अगर आप प्रोग्राम लिखते हो उसको भी हम उसको ये मशीन लैंग्वेज विल कन्वर्ट. ओके, बिकॉज जीरो एंड वंस आर द मशीन लैंग्वेज. हमें जो समझ में आती है that is a user language or high level language. Okay, now whenever you have this zeros and ones, these are called as a bits or binary numbers. Okay, now here the voltage level मैंने बताया था आपको, the voltage level 0 1 0 1. So whatever the voltages level are there, that is converted into the form of 0 and 1. Now the computer system needs bit pattern of zeros and ones to perform any operation. मुझे अगर दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, you will be writing down the program for addition of two numbers. This program will be converted into binary and ones and zeros, so that because your computer doesn't understand our the language. Okay, that only understands the binary language, so we have to convert that thing into a machine language. Okay, now the computer system needs bit pattern of zeros and ones to perform any operation. These binary patterns are called binary instructions, which are recognized and processed or executed by a computer to accomplish a task. Okay, so they are called as a binary instructions. क्योंकि हम अगर सपोज मेरा एक कोड है, ओके, सपोज मेरा एक कोड है एडिशन, दो नंबर का एडिशन करना है, और इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है 1 2 3 4 5 लाइन का प्रोग्राम है. सो दिस 5 लाइन का प्रोग्राम is converted into binary instructions. These are converted into binary instructions. Binary instructions. Now these binary instructions is in the form of ones zeros, are in the form of ones and zeros. So these ones or zeros are processed by the computer system. These are processed by the computer system. Okay, and once you process once you process that instruction which is in the form of binary instruction, then the result हमें जो मिलता है that is also in the form of ones and zeros. और जो हमको दिखता है that is the language which we understand. लेकिन internal operation जो भी होता है वो सब binary form में होता है. Okay, so the designer of the computer decides and implements these bit patterns based on the number and types of operations of a computer is required to perform. The most common operations are storing and retrieving binary numbers, arithmetic and logical operations on binary numbers. तो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्टोर करना, उसका इंपॉर्टेंट काम होता है स्टोर करना, बाद में जब चाहिए उसको रिट्राइव करना, स्टोर करना, रिट्राइव करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना. और बेसिकली ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेशंस. सो टू परफॉर्म, टू स्टोर द डेटा, टू रिट्राइव द डेटा एंड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, मोस्टली अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. तो हम जब डेटा स्टोर करते हैं, ना व्हाट वी शुड स्टोर, we should store either data or instruction. सपोज फॉर एग्जांपल एडिशन करना है मुझे, एडिशन का कमांड क्या है? सपोज एडिशन का कमांड है ADD. तो ये ADD जो है इसका प्रॉपर बाइनरी इंस्ट्रक्शन होता है. फॉर एग्जांपल अगर उसका बाइनरी इंस्ट्रक्शन है 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, 0 1 1 1 1 is the binary instruction or the representation of the command add, add. तो ये जो add है ये इंस्ट्रक्शन है, ये ADD में उसमें वैसे स्टोर नहीं कर सकता हूं. I have to store its corresponding binary number.
its corresponding binary number is 01111. तो हम जब स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी में सिर्फ दो ही चीजें स्टोर होती है. एक होता है जो डेटा बोले तो सपोज मुझे एडिशन करना है 10 और 21 का, ये दो नंबर को ऐड करना है, तो ये 10 is the data and 21 is also the data. So 10 and 21 has to be stored. So that is called as a data. और हम क्या को स्टोर कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शंस. ये अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको. So your computer stores the data as well as it stores the instruction. रिट्राइव, जब जब जरूरत है तब डेटा को रिट्राइव करो, या फिर जब जब जरूरत है इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करो. अभी एक मैंने आपको सिर्फ कमांड दिया ऐड, ऐसे कितने सारे कमांड्स है, और वो कहाँ पे स्टोर है? दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, ये वाले. ओके, सो टू स्टोर द डेटा, टू रिट्राइव द डेटा. अभी मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद इसका आंसर क्या है? 31 आया. ये 31 भी तो मुझे वापस स्टोर करना पड़ेगा, ये 31 भी तो मुझे वापस स्टोर करना पड़ेगा. तो डेटा स्टोर करना, आंसर जो आता है उसको स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, डेटा जब चाहिए तब उसको रिट्राइव करना, इंस्ट्रक्शन जब चाहिए तब उसको रिट्राइव करना, और ऑपरेशन परफॉर्म करना. इट कैन बी अर्थमेटिक और इट कैन बी लॉजिकल. लॉजिकल बोले तो एंड, और, नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस है. सो एंड सो फोर्थ. Okay, so the important work of your computer is to store, retrieve, and do operations. Okay, so that is the meaning of this. The most common operations are storing, retrieving binary numbers, arithmetic and logical operations on binary numbers. Okay, mostly these are the basic operations done by the computer system, done by the computer. Okay, now before I wind up, it's 12:05 now. Before I wind up, let's see what is the computer system. Okay, what is the computer system? See here now, what is the computer system? A digital computer system typically consists of 4 major components. मैंने फिर से बताया आपको, मैं फिर से बता रहा हूं. I want your concept should be crystal clear. Your foundation should be strong. हमने पहले देखा कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर क्या होता है. अभी हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम में ये चीजें होती है. See here, it consists of 4 major components: CPU, memory, इनपुट आउटपुट यूनिट, एंड सिस्टम बस. ये जो दिख रहा है ये सिस्टम बस है. ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सीपीयू, इट कंसिस्ट्स ऑफ मेमोरी, इट कंसिस्ट्स ऑफ आईओ यूनिट. ओके, then we will see the individual meaning of CPU, the individual meaning of memory. Already we have studied, but we will see this also IO unit. Okay, now here let me show you. You have a desktop. Suppose you have a desktop computer at your home. There is a keyboard, there is a mouse, there is a keyboard, there is a cabinet. Okay, there is a cabinet. Okay, so if I talk about the computer system, it consists of CPU, it consists of memory, it consists of IO, and it consists of system bus. अभी हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम. अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर, जहाँ पे कीबोर्ड है, जहाँ पे माउस है, यहाँ पे मॉनिटर है, और यहाँ पे कैबिनेट है. इफ आई आस्क यू वेयर इज योर CPU,
आप क्या बताओगे मुझे? वेयर इज योर CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? यस, एनी वन ऑफ यू? Cabin. कैबिनेट, यस, इट इज इन द कैबिनेट. सो CPU रहता है कैबिनेट के अंदर. वेरी गुड. वेयर इज योर मेमोरी? वेयर इज योर मेमोरी? यस. In CPU. इन CPU में ही होगा. CPU मैंने आई वुड से इट इज इन द कैबिनेट. ठीक है. आपका आयो कहाँ पे होता है? इनपुट आउटपुट. कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस. वेरी गुड. कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, मॉनिटर आउटपुट. बराबर है? बराबर है? यस. ओके. सिस्टम बस. Motherboard inside the cabinet. मदरबोर्ड इनसाइड द कैबिनेट. ओके. अदरवाइज सिस्टम बस में अगर बताऊंगा, अभी जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ओके, यहाँ से जो दिख रहा है वो है ये वायर्स, ये वायर्स, ये वायर्स. और कैबिनेट के अंदर बहुत सारे वायर्स. ओके. सो एक्चुअली जब हम सिस्टम बस की बात करते हैं तो विल बी टॉकिंग ओनली रिलेटेड विद द कैबिनेट, यानी CPU और मेमोरी के रिलेटेड. लेकिन जो मुझे आपको दिखाना है, यू कैन से द वायर्स कनेक्टिंग मॉनिटर विद द कैबिनेट, द वायर्स कनेक्टिंग योर माउस विद द मॉनिटर, द वायर कनेक्टिंग योर कीबोर्ड विद द मॉनिटर. Okay, so CPU, memory, IO system, so these all comprises of a computer system. तो ये आपको जो दिख रहा है, this all comprises of a computer system. So that is also the way in which you will be able to understand the computer system. Okay, लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे तो this is the the tip the in general, this is in general that your computer system consists of CPU. Okay, it consists of the CPU, it consists of the memory, it consists of the IO unit, okay, and the system bus. क्योंकि ये CPU का डेटा मेमोरी, मेमोरी से CPU, मेमोरी से IO यूनिट से मेमोरी में, ये सब कहाँ से होता है? ये सब सिस्टम बस से होता है. ये सब सिस्टम बस से होता है. Okay, so why it is called as the system bus? What are the different buses? Everything we will study in the next lecture. Okay. So today I will be sharing this e-book with you. जो जैसे जैसे मैं लेता हूँ वैसे वैसे पैरेलली ये भी पढ़ा करो ई-बुक में से. ओके. एंड अगर कुछ PPTs भी है तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ. Is it fine? Is it fine to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Any question? No, sir. No, sir. Have you got some the feel of this subject now? आपको समझ में आ रहा है ये सब्जेक्ट में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है? Yes, Yes, sir. Yes, very much, sir. Yes, sir. Okay. So please take this subject very seriously. This is scoring subject. You will learn the process of understanding the subject. You will learn the journey. You will enjoy the journey. Okay. So किसी को अगर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर से डर लगता है, वो डर दिमाग से और दिल से निकाल दो. And we will try to see that this subject makes you understand the concept, so that in the final year you can make a project based upon 805. Is it fine? Yes, sir. Okay. आपका अटेंडेंस हो गया क्या? नितिन सर आए थे क्या? Yes, sir. Done, sir. अच्छा, ठीक है. Okay, you can leave then. Thank you so much. Thank you, sir. 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 Bye bye. Thank you. Thank you, sir.